हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे मोर देन टू रेशियोज ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ दिया हुआ है एंड वी हैव टू शो वेरी कॉम्प्लिकेटेड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 27 a plus b c plus d e plus f. Now to see the question, see the given information, we are having three ratios equal here. If you are having three ratios equal, you can use the K method, which will be very advantageous here. K method matlab you can equate each ratio to K. We most of the times to solve left hand side and right hand side equal, we use K method when you have more than two ratios equal. This K method will lead you to the values of A, C and E in terms of K. So A will become equal to BK, C will become equal to DK and E will become equal to FK. Let us begin with left hand side. We have been provided with B, D, F. Inside the bracket we have A plus B upon B plus C plus D upon D plus E plus F upon F, the whole cube. When we were writing this, we are realizing that if we would separate it, जैसे कि A upon B plus B upon B किया अलग अलग, तो this A upon B can become equal to K. या ऐसे कर सकते हैं, हम A के जगह B के लिख सकते थे। आपको जो कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं। बी, डी एंड एफ को वैसे ही रखते हैं बिकॉज हमें तो ए, सी एंड ई की वैल्यू है के टर्म्स में। So let us keep B, D, F as it is. Let us write inside A upon B plus B upon B plus C upon D plus D upon D plus E upon F plus F upon F, the whole cube. This A upon B कितना हुआ था हमारा, कितना लिया था हमने, K लिया था. So this becomes K. B upon B 1, C upon D is again equal to K plus 1 plus continue K plus 1, the whole cube. Now the K's on adding and 1 on adding become 3, so it becomes a BDF into 3K plus 3, the whole cube. अब क्या कर सकते हैं? कैन यू सी द राइट हैंड साइड? यू वांट 27. ये 3 का क्यूब 27 ही होता है. सो इफ वी टेक 3 कॉमन फ्रॉम दिस क्यूब ब्रैकेट, देन वी वुड गेट BDF. When you take 3 outside the whole cube, it will become 3 cube into K plus 1 cube. So this is equal to 27 into BDF K plus 1 whole cube. BDF K plus 1 whole cube. Now what can you do? Should we start with right hand side? Or there is some more idea left with us? What if we write this as 27B K plus 1 D K plus 1 F K plus 1, and if we multiply this B inside, we will get BK plus B. Let's multiply this D inside, it becomes a DK plus K. Similarly FK plus K. So Fk plus F will come in similar manner. Here also earlier it would have been dk plus d into Fk plus F is equal to 27 into how much was Bk? A था, right? A ही हमारा Bk था plus B
व्हाट वाज डी के सी था, तो सी प्लस डी. एफ के कितना था, ई था, ई प्लस एफ. दिस इज ओनली योर राइट हैंड साइड. So without